काका तू किया डरे हम चल जाए समय ना तोर के रखेगा जानवर से पहले नहीं देखा नहीं कर देगा बैंक के कर देगा आगे देगा अरे नामे कर देगा और से पेट न भरी तो पूरे इलाके कर देगा और से न पेट भरी तो पूरे बिगहा में उठलाली के दुकानें खोल दे और से पेट न भरी तो आगे दे गाँव जाएगी जाएगी जाए ना घरे कदी लेबे का होई बने आने ला Oh, spoon you don't bring. Spoon? Where is the spoon? Vegetable? देखिए सब्जी दे दिए तो हम Long don't clean me आग में तो कहीं और चल रहा है सूट
अल्लाह सब इतना सब्जी कर लिया सब हम लोग खाए होते तो हम लेते थे। तुम्हारा भोजपुरी नहीं चलेगा यहाँ पे बुझे नहीं नहीं भूजा नहीं वही में कहते कितने सब्जी थे पैसा कहाँ से हो गया दुकान वाला के दुकान कितने वाला सुनते तो भुजिया भुजिया आलू है तो भुजिया बना नहीं है आलू तो मैं आलू नहीं किया आलू हमारे खाने में जबकि एक बार खाता दिन में ये भी कहते तो रहने का चाहिए इतने बनना भाई तब बनते दो गोटा खा ला है ना हम तो कुछ तो खा लेते रहे फिर थोड़ी देर खाना खा लिया भोरे भोरे बोल रहे इतना कि सब उठबे ना करे थे हम तो उठ के सोने तरह रही कि उठबे ना करे थे तो नाश्ता देते क्या करा खुद का पेट तो भरता नहीं तो अगर दूसरा नाश्ता बना के क्या ना खाता है अकेला पड़ता खाते तो ना खाए आप कोई कहते हैं लेकिन सुनते नहीं जब वो फोन करते हैं ना बेटा का हम कहते हैं कोई कहते हैं हाँ कुछ आपको फोन लगल है तो झाड़ लगा देते हैं लेकिन झाड़ लगाते लगाते अपने दिन चले हम तो देव तक झाड़ लगाते हैं लेकिन हम झाड़ लगाते हैं अपने दिन चलते झगड़ा लगाने की बात नहीं हम उठे तो सुबह में तो नाश्ता बना तो खाता नहीं अरे नाश्ता तुम बनाती नहीं एक अब चुप ना मुझे नहीं है एक चोटी मात्र दिन में मैंने एक चोटी खाता कि तरकारी 3-4 चोटी जो आदमी दिन में एक ही मरतबा खाएगा उसको तो खाना कम दिन एक ही रंग का सब्जी सुबह से ये नहीं हम तो सब ड्रामा जानते हैं हम कहो ना कि ये भी खिलाने में दिक्कत हो रहा है तो ये बोलो कहाँ गए चार्ज में करा वो नहीं यूज होगा कहाँ में है वो तो उस घर में अच्छा
मसरिया के सूत्र रात में जागे के होते बुझले अखन तक सुतल रहो तो अथी देतो सपोर्ट देतो तोरा से कहे छी वहाँ दौड़ धूप कनी कर दे तो कहाँ ना कहाँ गायब हो जाए सुतले रह तखना थे ले चार्ज हो सरिया के चार्ज हो जाए कंटिन्यू चार्ज होते 100 है तो रात्रि सपोर्ट करते वेस्ट करी घरे I hope through your channel that पैसा देखेगा तो जिंदगी में कभी नहीं खा सकते message goes. I really don't see the basis for your question. In response, you said, quote, it is a part. I thought you were supposed to ask me a question. Mr. Out from TV Pakistan, if you would like to entertain my question also. Okay. How about collusion? First of all, India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought up here. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and second, and how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So, look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. India has extended the import of Russian oil. It is a totally opposite position of the European sanction. Will you change your attitude during the G20 presidency? First, we need to establish the facts very clearly. The European Union, between February 24th and 17th November, has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India's. So the remark that you made that this is the way the European Union is going,
and this is the way India is going, I would very respectfully suggest maybe European Union is actually doing something very much more than India is doing it. Mr. Borrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. You're right, Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question, because my understanding of the Council regulations is that Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/201. I actually want to follow up with something you said at an India Today event a while ago. You were asked about India's downgrading in Freedom House and VDEM and other democracy scores. And the journalist asked you, quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? In your response, you said, quote, it is hypocrisy. I thought you're supposed to ask me a question. I am asking you a question. It is hypocrisy. We have the self-appointed custodians of the world who find it difficult to stomach that someone in India is not looking for their approval, is not willing to play the game we want to play. That doesn't actually answer the journalist's question. So I want to ask you again, are you concerned that perceived democratic backsliding in India is going to undermine its efforts to become a rising power in the world? I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. There are, many of these reports are actually riddled with inaccuracy. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. I just wanted to follow up, Minister, with a quick clarification. You're saying you have no evidence, this is related to the Canadian story, which I'm sure you're sick of speaking about. Have the Canadians, there's been reporting that there have been progressive visits from the Canadians to India, including in August. You're saying that you've never familiarized yourself with the documents that were, or no documents have been provided to you by the Canadians that purport to show evidence that Indian officials in Canada were aware of this attack. You have not seen Are you saying the Canadians gave us documents? I'm asking you if the Canadians gave you the intercepted document. No, In the diplomatic I communication. have said that if somebody gives us specific or relevant information, we prepare to look at it. So you have not received those intercepted communications from If I had, would I not be looking at it? I'm asking you for a yes or no. Thank you. And then the other question I was going to No, I'm not answering a second. ನೋಡಿ When in May this ನೋಡಿ year, my ಏನ country ಚಾಕ್ಲೇಟ್ confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them तो वो हम होते खबू के जो हम होते कभी से तो सिर्फ दूध के बोरा आन देते अब 2 किलो 3 किलो लेके बेरो सुलाते सच में सोना कोई लाता है खाली सोचने के लिए बोरा चले थे तो कहीं पैसा दो आ जाएगा तो कहीं नहीं करवा का पैसा सुन तो पैसा दे छोटा का तो पैसा सुन पैसा दे हां प्रमुख तो किछ थोड़ी भाषण करूँ मैं तो आई लिया दे दबा कर ले
कितना ही सब्जी बनाता है। सब्जी तो लेके खल के वो तो लेबू खल के आधा तो वो खल के रहता लग रहा दिया हम कहते ये सब्जी सका पेट न पड़ता पता रही तो पर क्या ये चल के बोते तो समझ सब्जी नहीं बड़ चल के सब्जी तो सब्जी का है हाँ तो खैलो होते तो कहते हाँ हम थोड़ा खैलो पहले से खैलियो से कहै छै अब के चलो आगे झूठ न हमरा के दो रंग के तू कर सब्जी का बेसी दे छी ना हम तो अब रात का परवल का क्या किया तो कटा गया तो रात का परवल रात ना खा दे वगैरह के दले कारी में उज का को कहे से हां तो कारी रहनी ना खेले बस सब्जी ए तो कार लगे तो खल के वो ले लेते तो तरकारी पके से तब हो चाहिए तब खाइ तो खाइ हां बड़ा तरकारी का पेट सबके सब तरकारी का प्लेट है कोसी गया करेगा ना सब पका तरकारी लगाई थे सेव ना सब्जी खेती देखिए 1 महीना में गार्डन बन गया बगीचा 1 महीना में बगीचा तो कहाँ वो काम करे छ बगीचा बगीचा कुछ लगेता कहाँ काम तो कुछ और कहाँ कहाँ से बिया सब बाली सब ला कर बगीचा लगाता हर जगह सब्जी घटते कैसे इतना सब्जी देला जो तो कला हम सुन सब देना देना तो ये अच्छा फल बने आइ छै बहुत फल बने आइ देखिएगा देखिए तो जो अधो मार देते हैं ना ना दे छ भाषण में देते दुकान करी देते ना नहीं हां ना करे ना करे छै तरकारी लग दे रंग कर चार हम के एक 10 रुपया हाथ में ते के अंदर आद लेके कुछ दे दे छी हमरा के एक एक रुपया इनके हिसाब लीजिए अभी में दे देगी कि नहीं तो भाई तो अच्छी लाएगी ए खा के जज से लाया जति सब नाम सब ना है के जातो हम ना जाइए एकरे के जटा वाला के सब दे जटा वाला के छी तो खांस के छै फूड कटे बिहान से वो चटनी भात खाते बिहान पोषण से दे तेल है तो सब नहीं छोड़ देंगे चल बोला के हाँ तो कहे थे ठीक हो जाते तब ठीक है दवाई खा रहा ठीक हो जाता वहाँ से करके तो लेकर नहीं सका 4-5 दिन बाद Independent international. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, clearing our bloody nose. Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our city